नमस्कार बच्चों, आई एम विंग कमांडर कृष्णमूर्ति फ्रॉम एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी हियर एट जनकपुरी दिल्ली। एंड बच्चों, आज आप लोग जब एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर एनडीए एज वेल एज फॉर योर टीएस एंट्री, तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्मॉल टिप्स देना चाहता हूँ ऑन द इंटरव्यू जो एसएसबी में होता है। तो बच्चों, ऑल ऑफ यू नो that interview is one of the most important part of your phase 2 जो आप SSB में करेंगे। This is called as personal interview, जिसमें आप एक इंटरव्यूइंग एग्जामिनर के सामने बैठेंगे in a prepared mode, and this is called as a semi formal interview, जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा on your education background, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑन सम रैपो बिल्डिंग क्वेश्चन, जहाँ से आप आए हैं, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑन योर फैमिली बैकग्राउंड, एंड देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑन वी कॉल इट एज रैपिड फायर मोड, जिसमें सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑन द करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड ऑल्सो मिलिट्री नॉलेज। तो बच्चों, आई एम टुडे गोइंग टू ब्रिंग यू 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएसबी में पूछा जाता है, especially from NDA and TS entry candidates. Sometimes these questions are asked from AFCAT and CDS candidates also, but primarily these candidates are asked from the NDA and TS entry candidates बच्चों. So let us discuss today what are the 3 most important questions which are asked in the SSB, all the 3 SSBs, Army, Navy and Air Force SSBs. So let us come to the first question. So today's class will be 3 most important interview questions which are asked. These are considered to be 3 very important questions बच्चों, because not answering these questions will not have a success rate as far as आपका officer like qualities are concerned. Now let me discuss the questions also, probable answers also, and which are the OLQs which these questions go and strike. Let us come to the first questions बच्चों. The first question is, what are your career plans? तो बच्चों, career plans, or we call it as graduation plans for TS and NDA candidates, are considered to be important part of, we call it as factor 1 questions, or we call it as reasoning ability questions. तो बच्चों, if you have finished your class 12 and if you are not having plans for graduations, that is apart from NDA, ये बोला जाता है स्टैंड बाय क्वेश्चन, स्टैंड बाय प्लान्स, बिकॉज एनडीए इज एक्चुअली अ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम. सो दिस इज नॉट अ कैरियर प्लान, दिस इज वन ऑफ द कैरियर प्लान. बैकअप ऑप्शंस आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. तो कैरियर प्लान्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. वी कॉल इट एज ग्रेजुएशन प्लान्स ऑल्सो. ग्रेजुएशन आफ्टर योर क्लास 12. तो बच्चों, योर बैकअप प्लान हैज टू बी क्लियर कट कि इफ नॉट एनडीए, if I am not able to get through to India because of whatever be the reasons, then my first and foremost will be either to go for engineering, or to go for medicals, or to go for a BSc degree. And bachcho, whenever you are going for any of these particular fields, which is the engineering or the medical, or we come to the BSc degrees, there is a related एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच इज़ देयर. फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग के लिए आप जेई मेंस देते हो, या नहीं तो अदर एंट्रेंस एग्जाम्स विथ जेई मेंस कॉल्ड एज बिटसैट और VIT, SRM, and there are a lot of other exams which are there. Orissa JEE is also there, WB JEE is also there. All these joint entrance examinations for engineering focus on your graduation for BTech degree. So बच्चों, your primary aim should be that in case I am not able to get through to NDA, for which of course you have been studying, you should parallelly study for these examinations so that your graduation, it does not get affected. Most of the time what happens is बच्चे focus only on NDA and they forget कि graduation भी होती है, because without graduation you cannot actually complete your education incomplete रह जाएगा. बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज बच्चे से दैट मैं एक साल ड्रॉप कर लूँगा एंड देन आई विल डू ओनली वन थिंग. बट बच्चों, एसएसबी डज नॉट वांट दैट टू हैपन. एसएसबी डज नॉट वांट कि आप 1 साल ड्रॉप करो या 2 साल ड्रॉप करो. नो, एसएसबी वांट्स यू टू हैव अ बैकअप प्लान, ताकि
Being in graduation, most welcome that you can go and attempt second time NDA, third time NDA. जब तक आपका eligibility ना हो, आप keep on attempting all these exams. But आपका graduation side by side चलते रहना चाहिए. So आपको जब reply करेंगे, तो you have to say that side by side I will continue with my graduation plans, continue to progress and pursue the graduation in whatever are the reputed colleges which are there, and of course I will keep on attempting till the time I am able to clear the NDA का not only written but also SSB. Also बच्चों, you must have a backup plan कि whenever you are going JEE mains exam, you should always and always say that your eligibility will be also for 10+2 BTech entries for Navy and TS entries for Army. These are two very important entries जिसमें maximum amount of permanent commission का vacancies are there. So you must avail of all the opportunities which are there with you, all the opportunities without missing these opportunities. So this is considered to be one of the most important questions which are generally asked nowadays for candidates who are going for NDA, TS entry, and also for SSB for 10+2 BTech entry, and these are the entries which they are going. Most of the time these questions are asked for CDS entries also. CDS में career plans after your graduation should be varied. You should not get stuck to one place only. You can give many options. आजकल बच्चों आफ्टर ग्रेजुएशन आपका फील्ड इज़ वाइड ओपन. जब आप गूगलिंग करोगे तो आपको इफ़ पर्टिकुलर किसी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है, फॉर एग्जांपल बीएससी हो या बीटेक हो, you must give at least 1, 2, 3 options. 3 options कि these are the career options which I can pursue and this is what I am going to do to pursue these career options. इसमें क्या होगा, entering officer will be sure that आपने टाइम वेस्टेज नहीं किया, you are good at time management with this organizing ability of factor 1, your reasoning ability is good which is again factor 1 का one of the old cues, and your effective intelligence is also good because आप practically सोच रहे हो. So the factor 1 of all the old cues आपका बढ़िया हो जाएगा. इसके बाद ही we progress to other old cues which are in factor 2 and 3. तो बच्चों बहुत important चीज़ है ये. Then we come to the second one, very important question. What does your friends think about you? बच्चों ये क्वेश्चन आप अगर देखोगे, what does your friends think about you? Friends, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी में भी मिलेगा. What does your friends think about you in your SD? बच्चों यही इंटरव्यूज में भी आता है. This we consider as factor 2 question. Factor 2 में बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट होल क्यू इज सोशल अडेप्टेबिलिटी, कि आप सोशली दूसरों के साथ कैसे अडेप्ट करते हो, हाउ डू यू मिक्स अराउंड विद पीपल. फ्रेंड्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सोशली हाउ यू आर मिक्सिंग विद देम. सो बच्चों यू मस्ट नो वॉट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, whether you are cheerful, whether you are considerate, whether you think about them, helpful nature, volunteering to help other person. Yes, these type of answers should come. How and which areas that friends सब मिल के जुल के कैसे आपका गोल के ऊपर परस्यू करते हैं. How do you all sit together and discuss about your future, plan out about your future, study together. ये सब चीज़ें आप फ्रेंड्स के साथ करते हो. Not only that, फ्रेंड्स के साथ गेम्स भी खेलते हो. So what all things your friends think about it, that you are a cheerful person, play with them for as far as games is concerned, planning with them for your future. These are the things which you have to tell. Another very important question which आजकल SSB में पहले से ही पूछते आ रहे हैं, but more nowadays which they are asking in the SSB is, what does your 2 advices which your parents give you? तो बच्चों पेरेंट्स आपको जब एडवाइस देंगे, जब आप यू योरसेल्फ गो एंड आस्क देम, सो दिस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द इनिशिएटिव पार्ट. एंड कैसे आप पेरेंट्स के साथ मिक्स करते हो एंड व्हाट ऑल एडवाइस दे गिव यू. तो बच्चों पेरेंट्स मीन्स फादर एंड मदर. तो फादर के साथ क्या एडवाइस देना है, मदर से क्या एडवाइस लेना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर. एंड इफ यू टेल दैट इन अ करेक्ट वे, कि father is giving you advice for your career plans, mother gives you advice regarding your friends, how you have to dress up, how you have to socially meet people, how you have to behave with people. These are the advice which mother gives you. Father is focusing on your career plans, how you have to prepare for your studies, and also how you have to do time management. Father also helps you in your
प्रिपरेशन एज वेल एज योर फाइनेंशियल थिंग्स आर कंसर्न. Whenever कॉलेज में कुछ फीस बढ़ जाता है या whenever you are going to go for a PG accommodation या hostel, you have to consult your father. So anything related to finance is father, anything emotional is mother. बच्चों दोनों is very important. These type of answers are asked in the questions are asked in the SSB, for which you have to be very confident. Not only two. If he is asking you for two advice, you say my parents give me more than two advice. You can give them three advice also. Okay, bachcho. So this is very very important, bachcho. These are the three most important questions which are asked in the interview. बहुत सारे questions सब पूछा जाते हैं interviews में. Each of the questions which are asked not only affects one, two, but more than two OLQs or officer like qualities जो हम यहाँ पे SSB गाइड डिफेंस एकेडमी में सारे बच्चों को रिलेट करते हैं कि जब आप आंसर करते हो फॉर एनी ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउ डज इट अफेक्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. बिकॉज बच्चों आफ्टर ऑल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर योर असेसमेंट क्राइटेरिया और योर आंसर की फॉर ऑल द SSBs, not only every part of the SSBs, interview, GTO, site. All the three assessors look for officer like qualities, and you must have a correct view and correct picture of what is this officer like qualities so that you can clearly and confidently answer. Okay bachcho. Now bachcho, let me give you an oversight of whatever are the batches which are there going on in or going to go on in the SSB Guide Academy. So let us see the upcoming batches which are there. So बच्चों हमारा जो upcoming batches है for NDA, then TES, then CDS, then AFCAT entries, TGC, ऑल दिस एंट्रीज के लिए हम SSB यहाँ पे SSB गाइड डिफेंस एकेडमी जनकपुरी दिल्ली में कंडक्ट करते हैं बच्चों. एंड लेट मी टेल यू द अपकमिंग बैचेस का डेट्स. द फर्स्ट डेट इज 18 नवंबर. 18 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक है. ध्यान रहे बच्चों, 18 नवंबर इज द बैच स्टार्टिंग डेट, तो एक दिन पहले रिपोर्टिंग डेट इज देयर. देन हमारा सेकेंड वाला है 6 दिसंबर से 6 दिसंबर से 21 दिसंबर के लिए. Our third batch is starting from 22nd December 6th of January 24. Our fourth batch is starting from 7th of January 24 to 23rd January 24. So बच्चों, you can select whichever the batch is most suitable for you for various entries. अभी TES 51 का upcoming SSBs are going to come in the month of January. तो जनवरी में जब TES एंट्रीज आना शुरू हो जाएगा तो आई वुड सजेस्ट कि आपका जो दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का जो बैचेस हैं, स्पेशली जब बैचेस जो जनवरी में स्टार्ट होता है 7 जनवरी में या 22 दिसंबर का बैच में TES बच्चों के लिए आ सकते हैं. बच्चों CDS ऑल्सो हैज स्टार्टेड विद द SSB. जैसे ही अभी NDA का SSB शुरू होने वाला है उसके बाद CDS का स्टार्ट हो जाएगा. ये दिस विल कीप ऑन गोइंग. सो बच्चों यू हैव टू नाउ प्लान आउट योर SSB. रिमेंबर वन थिंग, दीज डेट्स को नोट करके रख लेना बच्चों. These dates are given in the description link also. जब आप description link क्लिक करेंगे तो these dates are given in the description link. 18th of November is the first batch starting. Thereafter 6th of December, 22nd December and 7th January. And बहुत सारे और भी batches हैं. Every 14 days the batches are there. Each batch is for 14 working days. 14 working days. Each of the batches are 14 working days, which is excluding Sundays which are holidays. इसके अलावा 14 working days है. तो you must select कि अभी जो upcoming NDA is going to start now SSBs. Thereafter immediately TES will start. 10+2 BTech entries are going to start.
then CDS is going to start and AFCAT are already going on. AFCAT SSBs are still going on. बच्चों you must decide and remember one thing बच्चों, you must decide keeping JEE mains in mind, because JEE mains का जनवरी वाला एंड अप्रैल वाला भी है. सो बैच सिलेक्शन ऐसे ही स्टार्ट कर लीजिए. कम मच बिफोर, डोंट वेट फॉर द SSBs टू डेट टू कम एंड देन कम, बिकॉज आप अगर वेट करोगे डेट आने के लिए एंड देन यू कम फॉर द SSB, then your preparation will start lagging behind, because not only 14 days का आपको प्रिपेयर करना है कोचिंग में, बट इसके साथ another 2 to 3 weeks सेल्फ प्रिपरेशन करना है. जो भी हम यहाँ पे असाइनमेंट्स देते हैं उसको आपको जाके बाद में लिखना है एंड प्रिपेयर करना है. वॉट एवर आर द मिस्टेक्स विच यू आर कमिटिंग हियर इन द अकेडमी, यू हैव टू गो एंड राइट इट डाउन अगेन. दैट इज हाउ सेल्फ प्रिपरेशन होता है. बिफोर ऑल, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द SSB, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू डिराइव द मैक्सिमम बेनिफिट विच कम्स विद द कोचिंग पार्ट. सो बच्चों ध्यान रहे हमारा, आई अगेन रिपीट, 18th नवंबर, सेकेंड इज 6th दिसंबर, थर्ड इज 22nd दिसंबर एंड द लास्ट वन इज ऑन 7th of January. दीज आर द बैच स्टार्टिंग डेट्स. और एक दिन पहले द बैच विल बी रिपोर्टिंग डेट होगा. All these dates and the registration link is there in the description box. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करेंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा. प्लीज पे 2000 rupees as registration fees and the balance you can come 14,500 and pay at the academy. Total fees for SSB is 16,500 rupees, 16500. This is for the academy, for the only for the SSB fees है. बच्चों आपका जो हॉस्टल फीस वगैरह एवरीथिंग इज डिफरेंट, ये तो डिफरेंट है. तो बच्चों, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पार्टिसिपेशन इन कमिंग टू द SSB गाइड अकेडमी हियर एट दिल्ली जनकपुरी एंड अवेलिंग ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स विच आर देयर नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू. मैंने तो आज सिर्फ इंटरव्यू का कवर किया है, बट साइकोलॉजी, वी हैव गॉट रेप्यूटेड DIPR साइकोलॉजिस्ट एंड वी हैव गॉट रेप्यूटेड GTOs who are qualified in DIPR. We have also got a very good GTO ground. तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल्स अच्छा से मिलेगा, so that when you go to the SSB, you are confident to go and clear the SSBs with flying colors. Jai Hind everybody.